Hello everyone, very good evening. I believe I am proper audible and visible to you guys. If yes, please confirm in the chat. So hello everyone, welcome to the SQL Server live class. Here we will start from very basic and if my voice and I am proper visual to you, please confirm in the chat so that we can start with our agenda. Yeah. So before we start, I just want to let you guys that this class is going to happen in a both language. First, I'll try to explain in English and again in Hindi, right? So this is the part of 5 months of our data journey. We have done with our um, Excellent, and I have shared yesterday a video how to download SQL Server in your system. So I believe everyone have like downloaded in your systems and everything is okay. So we are here. I think good to go, right? So today we are going to discuss about SQL. So this is the agenda actually, and uh, yeah. So I think we can start if everything is clear and everything is okay to you guys. You guys are able to access. So please type as in the chat so that we can start. So I have divided actually this course in three sections. One is a beginner level, second one is intermediate, and third one is a advanced level, and fourth one also I have divided where we are going to cover some interview topics and uh, like a SQL real world project as well, right? We are going to go with like a 3 to 4 type of the project also. So ये एक्सेल की क्लास अभी तक हमने एक्सेल की क्लास कंप्लीट कर ली है। आज से हम एसक्यूएल देखेंगे। एसक्यूएल के अंदर हमने 4 सेक्शन बनाया है। एक बिगनर लेवल होगा जिसके अंदर हम बिगनर लेवल की चीज़ें देख रहे होंगे। उसके बाद होगा जो है इंटरमीडिएट लेवल, उसके बाद फिर हम देखेंगे एडवांस लेवल, उसके बाद इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड प्रोजेक्ट बिल्डिंग, राइट। एंड उसके बाद फिर हम मूव कर जाएंगे पावर बीआई पे। सो उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अभी तक कुछ डाउट होता है तो आप बता दीजिए। डाउट सेशन हम वीक में अरेंज कर सकते हैं। वहाँ पे जो है वीक में हम डाउट सेशन भी ले लेंगे, राइट। सो एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड, आई बिलीव एवरीथिंग इज़ विजिबल टू यू गाइज। सो बिफोर वी स्टार्ट, I just want to clear you guys. You don't need any like a prayer SQL knowledge. You just need to like a follow along with me with the course, right? We will start from zero and move step by step, right? So not an issue. So without any delay, I would like to share my screen. So once visible, please let me know. And here. So let's talk about the roadmap of the SQL Server. So here we are going to use SQL Server for the data for SQL. So SQL Server roadmap for data professional is like from beginner to advanced level, and again फिर उसके बाद हम real project करेंगे, ठीक है। This is the good for like business analyst, data analyst or data science roles, right? What is actually mandatory, what why SQL is actually mandatory for data job? So SQL is required in almost every data role. So SQL जो है almost सभी data role में जो है required होता है। faster and more powerful than Excel, ये एक्सेल से ज़्यादा पावरफुल और फास्टर होता है। यूज इन डैशबोर्ड रिपोर्ट्स एंड एनालिटिक्स, ये डैशबोर्ड रिपोर्ट्स और एनालिटिक्स में बहुत ज़्यादा ब्रैडली यूज होता है। आस्क्ड इन ऑलमोस्ट ऑल द इंटरव्यूज। तो ये वाला जो आप देख रहे हैं नीचे, ये वाला सेक्शन, तो ये बहुत ही यूज़फुल है क्योंकि जो है ऑलमोस्ट इंटरव्यू में ये पूछा जाता है, ठीक है। तो आई बिलीव सबको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा चीज़ें कि क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, क्या चीज़ें होने वाली हैं, सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, राइट। So this is going to like a we are going to like start from really from the very basic, and all the notes and everything I am just going to put over my GitHub repository, and you guys can directly pull from there. Otherwise you guys can go with the I'll also like a share to in WhatsApp group as well. So from there also you guys can get the full note of the SQL, right? So SQL is actually backbone for data analyst, right? So why, who should actually follow this roadmap? So I have designed this roadmap for the aspirant data analyst
business analyst or the data science aspirants, working professionals switching for data roles, students preparing for interviews. So ये जो है स्टूडेंट जो भी डेटा डेटा इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए भी हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम बहुत सारे जो है देख रहे होंगे कि इंटरव्यू के रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम जो है डिटेल वे में चलेंगे, ठीक है। तो उसमें हम देखते चलेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। सो स्टेज वन में हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ एसक्यूएल एंड एसक्यूएल सर्वर, सेटअप एसक्यूएल सर्वर एंड एसएसएमएस, क्रिएट डेटाबेस एंड टेबल्स, insert, update, delete operations, and import CSV files, SQL operator and filters. So these are the essential topics which we are going to see in our first class, right? As today. So today I am trying to cover most of the these of the theoretical part, so that everything is clear to you guys and you guys have the clear roadmap for the SQL, right? सो यहाँ तक अब सबको समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। हम जो है 3 से 4 सेक्शन में इसको डिवाइड कर रखे हैं। पहला स्टेज होगा एसक्यूएल फाउंडेशन के लिए, जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ें ऑपरेशन देख रहे होंगे। उसके बाद उसका आउटकम क्या होगा, आउटकम ये होने वाला है कि आप जो है एक डेटाबेस बना पाएंगे, रियल वर्ल्ड डेटा सेट पर आप काम कर पाएंगे, बेसिक क्वेरी आप लिख पाएंगे कॉन्फिडेंटली, राइट। एंड मॉडिफाई टेबल एंड डेटा, आप टेबल और डेटा को मॉडिफाई कर पाएंगे। सो दीज आर द स्टेप वी आर गोइंग टू cover in stage 1, right? So this is not going to like only the beginner level class, this is going to like a full stack data analyst class. So you can like follow along with me, and you definitely achieve your dream job. So because we are also uh, cover some interview topics as well, right? So stage 2, in stage 2 we are going to see like what data analytics and data analysis with SQL, like where we are going to filter our data by using a where class group, by having aggregate function, case statement, string, numeric data function, null handling, and the SQL join, जो कि बहुत ही core skill है, right? So these are the things we are going to see in our upcoming videos. एंड इन आउटकम की बात करें स्टेज 2 से, तो वी आर एबल टू आफ्टर द स्टेज 2 वी आर एबल टू like analyze the data set using the SQL, and we are able to like build the business reports, and we are able to like perform the join multiple tables, and also like we are able to answer the real business questions, right? So our main aim to start with the basic, so that everything is going to clear to your mind, so that anyone from the non-tech background also they are going to like grab the things along with me, right? So in the third stage we are going to see advanced and interview SQL. So in the third we are going to see like advanced and interview SQL. So where we are going to cover like a window function, which is very essential for the data analysis and the interview purpose, and sub queries and CT is also very useful. View and temp table is also very useful. These are like a core topic and advanced topic, right? Indexes and execution plan, performance optimization, store procedure for like automating our work. So वी आर गोइंग टू सी इन स्टेज 3 विंडो फंक्शन क्या होता है, सब क्यूरी क्या होती है, सी क्या होती है, व्यूज और टेम्प टेबल क्या होते हैं, इंडेक्सेस क्या होते हैं, एजुकेशन प्लान कैसे एसक्यूएल वर्क करता है एक्चुअली में, और उसके बाद परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन भी हम देखने वाले होंगे, ठीक है। और उसके बाद हम जो है अपना ऑटोमेशन के लिए स्टोर प्रोसीजर का भी यूज़ कर रहे होंगे। अगर आउटकम की बात करें तो स्टेज 3 के बाद वी आर एबल टू लाइक सॉल्व द कॉम्प्लेक्स एसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चंस, राइट द ऑप्टिमाइज क्वेरीज, लाइक एक्सप्लेन द क्वेरी परफॉर्मेंस and use SQL professionally at work, right? We are able to like work as a data analyst after the stage 3, right? Because till here we are able to like cover almost the SQL topics, and in a stage 4 we are going to like build our real world project, where we are going to like SQL data warehouse project, exploratory data analysis by using the SQL, advanced analytics, case study। तो ये सारी चीज़ें हम जो है कर रहे होंगे। तो ये ओवरव्यू देना इसलिए ज़रूरी था। उसके बाद जो है आप फाइनल आउटकम क्या होगा, इसके बाद जो होगा फाइनल आउटकम, आप जॉब रेडी स्किल जो है एसक्यूएल की गेन कर पाएंगे, आप अपना पोर्टफोलियो बना पाएंगे, स्ट्रॉन्ग इंटरव्यू कॉन्फिडेंस
आपके अंदर आ पाएगा, और एसक्यूएल प्लस बीआई एनालिटिक्स एंड रेडीनेस आप हो पाएंगे, ठीक है। तो दीज आर द स्टेप्स यू शुड हैव टू फॉलो अलोंग विद मी टिल द टाइम, एंड आई एम extremely sorry for the previous 2 days classes, because some of the like busyness I am not able to like conduct that class. So I think you guys able to like understand. So don't worry but about that. I'll try to like conduct some classes in the weekdays also, so that we can cover our like classes over here. सो लाइव क्लास शेड्यूल की बात करें अगर, तो लाइव क्लास जो है एसक्यूएल सर्वर की क्लास जो है यूट्यूब लाइव होने वाली है। उसके बाद सैटरडे संडे को तो 8 बजे चलेगी ही, और बिगनर फ्रेंडली होगी, हैंड्स ऑन होगा। उसके बाद ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है। सबसे अच्छी बात यह है कि सब बिल्कुल फ्री मिलने वाला है आप लोगों को भी, 100% हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के साथ। सो टिल हेयर इफ एवरीथिंग इज क्लियर टू यू गाइज, सो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न एंड what are the things we are going to cover in this session. So I think everything is going to clear to you guys till here, right? So यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जो है हमेशा हमारा सैटरडे संडे को हमारा क्लास होने वाला है, और उसके साथ ही हम कोशिश करेंगे जो भी हमारी क्लासेस छूट गई हैं 2 दिन की, उसको कवर करने के लिए हम वीक डे में भी कुछ क्लासेस अरेंज कर लेंगे, जिससे जो है हम वीक डे में भी अरेंज करके अपना जो भी टॉपिक हमारा छूट गया है उसको हम कवर कर, टॉपिक नहीं छूटा है मतलब जो भी क्लासेस हमारी डिले हुई है उसकी वजह से, तो उसको हम जो है कवर कर पाएंगे, ठीक है, स्पीड अप कर पाएंगे। सो टुडे इज एक्चुअली बेसिक क्लासेस, बेसिक थिंग्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हेयर। सो आई थिंक यू शुड हैव like already downloaded the SQL server in your system. If not, please go and download. I have shared the link in the in my I have shared the link in the WhatsApp group, so you guys can go and download. So अभी तक सबको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से जो है एसक्यूएल सर्वर को डाउनलोड करना है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग कर पा रहे हैं। अगर किसी ने करा है तो अभी यस करके हमें एक बार बता दीजिए यहाँ पे, जो जैसे कि इसके बाद जो है हम अपना कोर टॉपिक पे जो है आज स्टार्ट कर दें, ठीक है। सो एसक्यूएल सर्वर एक्चुअली है क्या? एसक्यूएल सर्वर क्या है कि डेटा है, डेटाबेस है, डीबीएमएस है, एसक्यूएल क्वेरीज है। सो इस तरीके से एसक्यूएल सर्वर काम कर रहा है, कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। सॉरी 1 minute प्लीज़। So let me turn on my pen. सो हेयर यू कैन सी एसक्यूएल सर्वर क्या करता है। एसक्यूएल सर्वर के अंदर जो है डेटा होता है, डेटा के बाद डेटाबेस होता है, डेटाबेस के बाद डीबीएमएस होता है, आरडीबीएमएस होता है, एसक्यूएल बेसिक्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आज हम देखने वाले हैं। तो ये जो है बहुत ही कोर होता है, कोर टॉपिक होता है। एज ए डेटा एनालिस्ट आपको आना चाहिए, क्योंकि इन एवरी इंटरव्यू आस्क यू व्हाट आर द डेटा, व्हाट आर द डेटाबेस, type of the DBMS, what the DBMS, how to work SQL with SQL. So these understanding if you have, so you are like play a really crucial role in the interview, and you are able to like crack your interview as well, right? So I have mentioned these things in a proper way, so that everything is going to clear to you guys. So till here आई थिंक एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू। और ये क्लास जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाली है, जिसमें हम जो है फर्स्ट ट्राई करेंगे कि इंग्लिश में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करें, उसके बाद फिर उसको हम सेम चीज़ को रिपीट करने की कोशिश करेंगे हिंदी में। अगर कहीं भी कुछ नहीं समझ में आता है, सेम टाइप ऑफ चैट पे पूछ सकते हैं, और जो है हमारा वीकेंड क्लास जो होगा उसके अंदर जाके डाउट क्लियर सेशन भी आप डाउट क्लियर सेशन भी हम अरेंज कर लेंगे, वहाँ से भी आप जाके डाउट क्लियर सेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर नहीं हो रही हैं तो एक बार बता दीजिए। अगर मैं फास्ट जा रहा हूँ या फिर कोई चीज़ ऐसा है जो मैं अच्छे से नहीं बता पा रहा हूँ, आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है, तो एक बार बता दीजिए, उसको हम रिपीट कर लेंगे, ठीक है। So if till here everything is clear to you guys, please type S in the chat so that we can start. So our first agenda is going to like so our first agenda is going to, so let's start with our basic question. What is SQL actually? So what is SQL? So if you guys know what is SQL, so please type in the chat. So I believe everyone know what is SQL. If no one everyone
if you are beginner and you don't have any knowledge, so I'll just going to explain you what is SQL actually. So SQL is actually stand for the structured query language, and the SQL is stand for the structured query language used for the communicate with the database. So here you can notice these term used to communicate with database. Here you can see one word is communicate, second one is database, and here by using the SQL we are able to like insert, update, delete, retrieve data from the database. I believe everything is going to clear. So SQL क्या होता है? SQL एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है जिसका यूज हम जो है डेटाबेस से बात करने के लिए करते हैं, जिसके अंदर हम डेटा को डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, या बहुत सारे ऑपरेशन जो है वो सारा कुछ हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। सो एसक्यूएल इज स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल इज लैंग्वेज यूज टू लाइक अ टॉक टू डेटाबेस, and using SQL we can like read our data, you know, and insert new record, update existing record, and delete if there are any incorrect data as well, right? So by using the SQL we are able to do these things as well, right? So SQL is actually not a tool. SQL is actually not a tool. SQL is not a software. So SQL क्या है फिर? SQL is actually a language. So SQL क्या है? SQL is a language. SQL एक लैंग्वेज है, ठीक है। SQL एक लैंग्वेज है, ये कोई टूल नहीं, कोई सॉफ्टवेयर नहीं, इट्स अ लैंग्वेज। यू कैन ट्रीट एज अ लैंग्वेज। सपोज इन सपोज SQL is now how humans communicate with database. So SQL क्या है? जैसे कि हम आपस में बात करते हैं अपने थॉट को एक दूसरे से बताने के लिए, समझाने के लिए, बात करने के लिए, जिससे कि हमारा जो भी मैसेज है वो कन्वे हो पाए। सो इसके लिए हम यूज़ करते हैं क्या? हम यूज़ करते हैं कोई एक लैंग्वेज, जिसको जैसे कोई हिंदी यूज़ करता है, कोई इंग्लिश यूज़ करता है, समवन यूज सम अदर लैंग्वेज एज वेल। सो दिस इज़ अ लैंग्वेज टू टॉक टू अ डेटाबेस। सो डेटाबेस से बात करने के लिए जो है हम एसक्यूएल सर्वर एसक्यूएल का यूज़ करते हैं। इमेजिन इफ वी हैव अ टेबल कॉल एम्प्लॉय। in employee table we want to like find out the all employee name, employee from the IT departments, employees with the salary greater than 50,000, and you don't scroll manually actually because data is huge. So in this case we are going to use SQL query. So by using SQL query we are able to find out these data in very effective manner, right? So this is the way we are going to use, right? सो अभी तक सब चीज़ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। एसक्यूएल एक्चुअली कोई ना तो मशीन है, ना तो एसक्यूएल को आप एक टूल ट्रीट कर सकते हैं, ना तो आप इसको जो है एक इसको एज एज अ लैंग्वेज समझ के चलिए कि एक लैंग्वेज है जो कि डेटाबेस से बात करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो एसक्यूएल को क्या है? एसक्यूएल जो है डेटाबेस से बात करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी तक यहाँ पे सबको समझ में आ रहा होगा। So why SQL is mandatory? Why SQL is important for the data job? So many people are thinking that. So why actually SQL is important for the data job? So let me very clear here. So SQL is not optional for the data jobs. Actually SQL is a mandatory skills. So everyone should have the understanding and have the very good command of SQL. So you are able to like get the job in data related world, right? Like you are going for the data analyst, business analyst, data scientist, or any other role which is related to data, like a developer, BI developer, and SQL developer as well. There are many data related work. So for that you should have to understanding, and the knowledge of the SQL is going to give you the advantage. And the most of the interviews are going to like um, depend on like a SQL as well, right? So सारे के सारे इंटरव्यू का जो एक मैंडेटरी स्किल होती है जो कि एसक्यूएल होती है, और एसक्यूएल में भर भर के रिजेक्शन होते हैं, ठीक है। तो एसक्यूएल को आप हल्के में मत लीजिए, एसक्यूएल बहुत ही अच्छी चीज़ है और इसको यूज़ करके आप बहुत अच्छा जॉब ले सकते हैं डेटा एनालिस्ट में। तो सबसे पहला क्वेश्चन एसक्यूएल पे ही होता है हमारा, ठीक है। सो एक्चुअली ऑलमोस्ट एवरी डेटा जॉब वर्क विद डेटाबेस, ठीक है। सो डेटा इज़ नॉट एक्चुअली स्टोर्ड इन एक्सेल फाइल,
what happened when data is increased, so that time not able to, we are able to like manage our data in only using the excel. So for that purpose we are going to use uh, a database. So for talking that database we are going to use SQL. So SQL is a language. So that's why SQL is mandatory. So where is data stored in companies? In a real companies क्या होता है, सेल्स डेटा, कस्टमर डेटा, ट्रांजेक्शन डेटा हो, लॉग डेटा हो, ऑल आर स्टोर्ड इन अ डेटाबेस। सारा का सारा डेटा जो है डेटाबेस में एसक्यूएल जो है स्टोर होता है, ठीक है। एंड एसक्यूएल इज यूज टू लाइक एक्सेस ऑल ऑफ देम। सो एसक्यूएल क्या करता है, ऑल दोज डेटा को एक्सेस करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज एसक्यूएल एज वेल, ठीक है। सो चाहे डेटा एनालिस्ट हो, बिजनेस एनालिस्ट हो, डेटा साइंटिस्ट हो, या फिर एसक्यूएल स्ट्रांग होना आपका बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं हाउ। Okay, so I believe till here everything is clear. We are able to understand what is SQL. Before we deep dive, I just want to let you know, guys, what is data actually. So many people are saying, "Oh, data is a new oil. Data is a new generation. Data is everything. Data is a very crucial," and these kind of the words we are hearing over here there, right? So what is the data actually? So data is actually raw fact and figure. So you can see it say data is raw fact and information collected about everything, like a example, like you can say your name, age, salary, city. So data become information after processing the data become the information, right? So used in business decision, data is also used very useful for the business decision as well, right? So SQL is not data is a new oil. Why? Because data itself, why do people say data is new oil? Because just like oil was the most valuable resource in the past, data is the most valuable resource in today's, right? So जैसे कि पहले क्या था, पहले जो है ऑयल को मोस्ट वैल्यूबल माना जाता था रिसोर्स इन द पास्ट टाइम में, बट अभी करंट टाइम में क्या है, अभी आज के समय में डेटा को जो है मोर वैल्यूएबल रिसोर्स माना जाता है, ठीक है। नीड टू बी एक्सट्रैक्टेड जस्ट लाइक डैट, ऑयल जो है वो उसको क्या करते हैं, ऑयल नीड टू बी एक्सट्रैक्टेड, ऑयल को निकाला जाता है कहीं से, उसके बाद उसको रिफाइंड करते हैं, यूज टू क्रिएट फ्यूल। जस्ट लाइक डैट we are going to like a need to we collect our data in somewhere and process those, analyze those data to make that decision, like. So I able to make you guys understand why we actually use. So hi, hello, so so I think you guys are able to understand what is a data actually. So data is actually a raw fact or information about the anything, and which we can like store and organize in a proper way and like a use in our um, to make like a decision by using those data. So this is called the data itself is nothing. Suppose your name is like telling us nothing, but when you find something from your name, so that is going to become your information, right? So companies like Google, Amazon, Facebook make millions of dollars using those data, right? Because many companies and every companies are depend in those days on on data. So everything is depend on data. So Preeti, I think we should start. Okay, don't worry. I'll let you know what are the data analysis. Okay, so मैं कवर कर लूँगा डेटा एनालिसिस क्या होता है. So till here, just we are focusing on what is the data here, so that everyone should be clear here, right? So don't worry about that. Okay. So actually, so data is क्या होता है? Data is a new oil because it's a very valuable, but like oil, data is useful only after the processing, because every data is not valuable. Because suppose I am here teaching you and you guys are here
taking the class. But if I'm not going to share these notes with you guys and uh, upload this video after the live class, so this is data is not going to useful for you guys. So after after processing those data, it's going to useful. So we are able to make some decision. So many people are thinking how much data is generated every minute. So do you guys have any idea how much data generated in every minute? Anyone have any idea about that कि एक मिनट में कितना डेटा जनरेट हो रहा है? एक मिनट में कितना डेटा जनरेट हो रहा है? आप लोगों को कुछ आइडिया है इसके बारे में? हाउ मच डेटा इज जनरेटेड इन एवरी मिनट? एनीवन? ओके. ओके. So actually guys, in here in a simple example you can see in every minute on the internet, million of the Google searches, million of the Google searches, million of Google searches, million of Google searches, and hundred thousands of Instagrams posts, a million of WhatsApp messages, thousands of users videos watched. So globally, humans generate hundred of million on terabyte for every single day, right? So it's going to huge amount of data, not like a era data. It's going to like a very huge amount of data. To manage that data, we should need to have some space where we are able to manage those data. For that purpose, we are going to use DB database, right? So every minute huge amount of data are generated through like a social media, online shopping, banking, and mobile apps, and everything is going to generate data. So for those data we need to collect somewhere. For that purpose we are going to use our database, right? So so अब ये बात आती है कि हाउ डू वी मैनेज दिस डेटा. सो इसको अब मैनेज भी करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारा डेटा जनरेट हो रहा है. तो हाउ टू मैनेज दिस डेटा, राइट? So a database is an organized collection of data. So a database, when we are going to manage this data, that time, so the database, so the database comes into the picture. So when we are talking about the database, how to manage those data, for that purpose database is come into the picture. So database is what? It's a organized collection of data, store large data securely, and used in bank, Amazon, hospitals, and these kind of the companies, and many other sector as well, right? In almost every sector, right? So data are going to used. So SQL is used to store data. Sorry, a database is an organized collection of data. To work with database, we use some language that is called SQL, right? So SQL क्या करता है in this case? SQL is used to store those data, retrieve the data from the database, update the data, delete the data. Example, in a school database, suppose there are a school here. This is the school. Sorry, I am very bad in writing. So suppose this is a school, and a school we have a database that is called a student name of student, and roll number, marks, and using SQL we can find the student with the mark above 90 and update student's mark, delete the old record. We also to manage large amount of data efficiently, we use database, and to communicate with the database we use SQL, right? So क्या होता है, for large amount of data को manage करने के लिए, हम database यूज़ करते हैं, और इस database से बात करने के लिए हम यूज़ करते हैं SQL को, ठीक है? तो SQL को हम यूज करते हैं डेटाबेस से बात करने के लिए. सो SQL क्या है? एक लैंग्वेज है. ये एक लैंग्वेज है, ठीक है? सो SQL इज अ लैंग्वेज टू टॉक टू द डेटाबेस. सो डेटा इज सो डेटा जो है अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन होता है, उसको उस डेटा को स्टोर करने के लिए इन अ प्रॉपर वे वी यूज़ डेटाबेस.
ठीक है। तो डेटा बेस को हम यूज करते हैं। अब उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि डेटा डेटा कितने टाइप का होता है। टाइप ऑफ डेटा की अगर हम बात करें, देयर आर मेनली थ्री टाइप ऑफ द डेटा। वन इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर्ड डेटा विच इज अवेलेबल इन अ टेबल फॉर्म, लाइक these kind of D, B, C, D, and here have our column as well, row and column. So this is called the table based structured data. And another one is called unstructured data, where we store like image, videos, and other kind of the data. And another one is called the semi structured data, where we store our data in a JSON or XML format and many other formats, right? So this is the kind of the data actually. So अभी हम बात करने वाले हैं कि डेटाबेस एक्चुअली होता क्या है। अच्छे से बात कर लेते हैं इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो डेटाबेस क्या है? डेटाबेस इज अ ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा डेट इज स्टोर्ड इलेक्ट्रिकली एंड द कैन बी इजीली एक्सेस्ड, मैनेज एंड अपडेट। A database is actually a place where data is stored in a structured way. एक्चुअली क्या है, एक डेटाबेस जो होता है वो होता है कि एक प्लेस होता है जहाँ पे हम डेटा को इन स्ट्रक्चर्ड वे में जो है डेटा को स्टोर कर पाते हैं, ठीक है। तो डेटाबेस क्या है? डेटाबेस को सही तरीके से स्टोर करने के लिए जो सिस्टम यूज होता है उसको हम बोलते हैं डेटाबेस। डेटा को सही तरीके से यूज करने के लिए जो भी सिस्टम यूज होता है उसको हम डेटाबेस बोलते हैं, ठीक है। और उस डेटाबेस से बात करने के लिए जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं एसक्यूएल। सो टिल हेयर आई थिंक एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू गाइज। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि डेटाबेस क्या होता है और ये सारी चीज़ें कि डेटाबेस होता क्या है, उसका जो है एसक्यूएल क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा। डेटा क्या होता है, कितने तरीके का डेटा होता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, डीबीएमएस की। तो डीबीएमएस क्या होता है एक्चुअली? डीबीएमएस क्या होता है एक्चुअली? सो डीबीएमएस data what is a DBMS actually? So DBMS, database management system, which is used for software that manage the database. Example, MySQL Server, Oracle, these kind of the this is called the DBMS, database management system. अब क्या है, हमारे पास डेटा है, इस तरीके से हमारे पास डेटा है, ठीक है। अब इस डेटा को स्टोर करना है, उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं डीबी को, इस तरीके से। अब इस डीबी से बात करना है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं डीबी एमएस को। और इस डीबी एमएस के बीच में, अब बाई यूजिंग अ डीबी एमएस वी आर एबल टू लाइक ये डीबी एमएस क्या है? कुछ नहीं, ये आपका कोई भी एक लैंग्वेज हो सकता है एसक्यूएल का, ठीक है। एसक्यूएल कोई भी एक लैंग्वेज हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे एक जैसे ये डेटा है, इसको हमने यहाँ पे डीबी में स्टोर कर लिया डेटाबेस में। अब उस डेटा को जो है हमको एक्सेस करना है, अपडेट करना है, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसके लिए हम जो है यूज़ करते हैं डीबीएमएस को। और डीबीएमएस डायरेक्टली जो है यूज नहीं होता। डीबीएमएस को यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं एसक्यूएल, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। So many people are saying sound is very low. I think now it's good now. If now it's a good, and if it's a proper audible, so please let me know. So I think now it's a good to go, right? I think now it's a now sound is better, right? So DBMS actually stand for the database management system. It's a software system that allow user to create database, store the data, retrieve the data, update the data, manage the data securely. And in a simple word, a DBMS is a software that help us manage the database, ठीक है। तो DBMS एक सॉफ्टवेयर है जो हमें हेल्प करता है जो है डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। और उस DBMS जो है डायरेक्टली यूज नहीं होता, उसके लिए हम यूज करते हैं एसक्यूएल एक लैंग्वेज
DBMS से बात करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपल तरीके से आप समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि डेटाबेस क्या होगा, जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करते हैं। DBMS क्या होगा, जहाँ पर DBMS क्या होगा, सॉफ्टवेयर दैट मैनेज दैट डेटा, राइट। सो डेटाबेस स्टोरेज एंड DBMS मैनेज ऑफ दैट स्टोरेज, ठीक है। तो मैनेजर ऑफ दैट स्टोरेज यू कैन से DBMS। तो DBMS क्या करता है, उस डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो डेटाबेस स्टोर करते हैं और उसके बाद ये सब चीज़ें कर लेते हैं, ठीक है। सपोज एक हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज इन अ लाइब्रेरी देयर आर अ बुक्स डेट्स यू कैन कंसीडर एट डेटा, एंड द library building you can consider at a database. There lot of books are available as a data. You can consider a book, you can consider book, I just write B as data, as data. And you can consider library building as database. And you can consider लाइब्रेरियन को आप क्या कंसिडर कर सकते हैं, लाइब्रेरियन को आप DBMS, लाइब्रेरियन को आप DBMS कंसिडर कर लीजिए। और जो है द लाइब्रेरियन क्या करता है, लाइब्रेरियन स्टोर्स द बुक and the find the book quickly, but because the data is book is organized in a proper way, right. So this is the way we use and maintain those record, prevent the duplicate. So DBMS work like a librarian of a data, ठीक है। तो यहाँ अभी अभी उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा कि व्हाट आर द DBMS एंड व्हाट आर द DB एंड व्हाट आर द डेटा, राइट। सो सोचिए कि आप जो है अब हम बात करते हैं एक और एग्जाम्पल के बारे में कि जो है एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके, सो लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। ओके छोड़ो, फिर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे क्या करता है, व्हाट डज अ DBMS डू, अ DBMS क्या करता है, स्टोर डेटा in a organized way, allow multiple user to work with those data, and provide the security controls the data access, and maintain the data consistency, and prevent data duplicacy, right. So this is the purpose of we use our database DBMS, right. So in a real world, you can consider in a bank, customer detail are stored, transactions are stored, and accounts balance are updated. The bank system use a DBMS to manage the all these kind of the data, right. Suppose when you like a transfer money, the DBMS update the database safely. Real world example, like it's a real world example, right. सो आई थिंक यू गाइस आर एबल टू अंडरस्टैंड। कस्टमर का डेटा है, उसका ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है, बैलेंस है, सब DBMS मैनेज कर रहा है, ठीक है। जब पैसा ट्रांसफ़र करते हो तो DBMS सेफली अपडेट करता है, ठीक है। और उसके बाद जो है उस तरीके से इसको अच्छे से मैनेज करता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि आप समझ लीजिए कि एक सोशल मीडिया का एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप बात कर लेते हैं इंस्टाग्राम क्या करता है, इंस्टाग्राम स्टोर्स योर यूजर अकाउंट and followers, post, like, comments, and all of these handled by the DBMS in the background, right. In a real world, right, it's a real world. Okay, so this is the way we use our DBMS software. So there are some popular DBMS where we are able to see like SQL Server, MySQL, Oracle, PostgreSQL, MongoDB. But in our course, we are going to using SQL Server. We are going to use SQL Server, and I have dropped video related to how to download SQL Server. To make sure to download, because tomorrow is also our session. So from tomorrow as well, we are going to like start our uh, more like a practical based training, right. Because these things are like a necessary part to understand. That's why I'm teaching you guys here. So टाइप ऑफ डेटाबेस की अगर हम बात करें, देयर आर द
many kind of the data, but we have consider here. सो अब टाइप ऑफ डेटाबेस की बात करें तो इसमें जो है मेनी काइंड ऑफ द डेटाबेस अवेलेबल इन द मार्केट, बट देयर आर मेनली टू काइंड ऑफ द डेटाबेस. वन इज लाइक ए रिलेशनल डेटाबेस एसक्यूएल बेस्ड, एंड सेकंड वन इज non-relational database that is also called NoSQL database. So relational database is important for the data role, and the non-relational database actually important for like in a big query model, and those purpose we use our uh, non NoSQL database as well. But in our course we are going to use SQL database, which is BMS, which is like a relational database, right? So so what is actually relational database, ये आप लोग को समझ में आना चाहिए कि relational database क्या है. So if anyone know what are the relational database, please write in the comment. And our relational database is actually a type of database where we store our data in row and column structure, as earlier I have mentioned, right? So and the relationship or created between those table, it follow the structured format. ये एक structured format को follow करता है. a relational database होता है जो कि row and column के base में डेटा को स्टोर करता है, ठीक है. सो की फीचर्स ऑफ रिलेशनल डेटाबेस: डेटा स्टोर्स इन अ टेबल और रिलेटेड यूजिंग द की लाइक अ प्राइमरी की एंड फॉर्म की, इट्स रिलेटेड टू ईच अदर, राइट. एंड द use SQL language to like communicate with those data, and the structured schema, fixed design here, and the strong data integrity here. So example, let's take an example. Imagine a company which is a company database which is called employee database employee database एम्प्लॉय डेटाबेस. सो एम्प्लॉय डेटाबेस में मेनली क्या होता है, एम्प्लॉय का आईडी हो गया, उसके बाद क्या होगा, नेम हो गया, एंड वी हैव डिपार्टमेंट आईडी एज वेल, DID. Okay, so in employee database we have employee ID, name and department ID, and we have one more table that is called department. In a department table we have like a department ID, and we have a department name, D name, ठीक है. तो these we have like a two table. One is called employee table, second one is called the department table, right? So in a employee table we have employee ID, employee name and department ID. In a department table we have department ID and department name, and both table are connected using the department ID. Here you can see department ID is a common in both table. Department ID is a common, so that relationship is made in relational database, and it's connected with a relationship which is called uh, primary key and the foreign key. We will see in upcoming videos what are the primary key and what are the foreign key as well, right? So this is the things you can understand. You should need to like have this knowledge, so that you are able to understand what are the relational database. As name suggests, it's have some relation with the data, right? Okay, so relational database are used where like a data is structured, accuracy is very important, and relationship matter. So डेटाबेस जहाँ पे बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में ज़रूरत होता है, एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट होती है, उस बेस में जो है हम जो है रिलेशनल डेटाबेस का यूज़ करते हैं. एग्जांपल अ बैंक सिस्टम, जहाँ पे जहाँ पे कस्टमर्स नेम होंगे, अकाउंट्स होगा, ट्रांजेक्शन होगा, and you can imagine e-commerce stores like Amazon, Flipkart. They have like orders, products, customers, and these kind of the tables over there, and these table are connected with each other with some keys, right? And we have like a HR system database where have like employees in departments and salaries,
So these kind of the things we have in a real world tables we have, suppose. And for that purpose we are going to use relational database, so that we are able to like manage those data in a proper way. And by using SQL database we are able to find out, because in our course we are going to SQL Server. So in this course, as we know, we are going to use SQL Server, which is called the relational database. सो एक बार हम इसको सेम चीज़ को हिंदी में आप लोग को बता देते हैं कि रिलेशनल डेटाबेस क्या है। डेटाबेस जो है रॉ और कॉलम में स्टोर होता है और टेबल एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ये स्ट्रक्चर सिस्टम होता है, जैसे कि अभी आपने को मैंने बताया कि एक सपोज एम्प्लॉई टेबल है जिसके अंदर एम्प्लॉई आईडी है, एम्प्लॉई नेम है एंड डिपार्टमेंट आईडी है, और एक डिपार्टमेंट टेबल है जिसके अंदर डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट नेम है। सो बोथ अगर आप दोनों के बीच में एक कॉमन चीज़ ढूंढेंगे तो यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट आईडी दोनों में मिल जाएगा, एम्प्लॉय टेबल में एंड डिपार्टमेंट टेबल में। सो एम्प्लॉय टेबल के अंदर जो डिपार्टमेंट आईडी है और डिपार्टमेंट टेबल के अंदर जो डिपार्टमेंट आईडी है, ये दोनों एक दूसरे से प्राइमरी एंड फॉरेन की के रूप में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, कुछ इनका रिलेशनशिप होता है, ठीक है। सो की फीचर्स की अगर बात करें तो डेटा टेबल्स में होते हैं, ठीक है। टेबल्स की से कनेक्टेड होते हैं। एसक्यूएल लैंग्वेज यूज होती है इसको इससे बात करने के लिए। स्ट्रक्चर्ड एंड फिक्स होता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर होता है वो फिक्स होता है, ठीक है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, इस तरीके से हमारे पास कुछ एग्जांपल हो सकते हैं कि बैंक सिस्टम में कैसे हम डेटा को मैनेज करते हैं, अमेजोन कैसे अपने डेटा को मैनेज करता है, फ्लिपकार्ट कैसे मैनेज करता है, एचआर सिस्टम के अंदर डेटाबेस होता है तो उसको हम कैसे मैनेज करते हैं। यहाँ डेटा स्ट्रक्चर्ड होता है इसलिए रिलेशनल डेटाबेस यूज होता है। अब सेकेंड टाइप की अगर हम बात करें, सेकेंड वन इज कॉल्ड द नॉन रिलेशनल डेटाबेस। आ रिलेशनल डेटाबेस और नॉन रिलेशनल डेटाबेस ऑल्सो कॉल्ड नो सिक्वल डेटाबेस, or non-relational database also called the NoSQL database, right? So data is not stored actually in a traditional table and fixed relationship. It is more flexible actually, right? So key features of non-relational database is here: no fixed table structure, schema can be changed easily, stores data like a JSON, key value pairs, right? Suppose we have key value pairs name like this, and we have like something here, and we have something like date and like this. So this is called the key value pair data, right? So we have like a documents format, graphs, this is called, and this is all comes under the non-relational database. So designed for the large scale and fast changing data, we used our non-relational database, right? So simple example we can take here: instead of table, data may store in a like a JSON, like that though I have explained earlier, like in a name, and name in a name connected with the like mm, in a key value pair. Key is name and name is actual name, like that. So actually no strict table structure required in a no relational database, so, right? So non-relational database are used where data are actually structure change frequently. जहाँ पे actually non-relational database are useful where data structure are change frequently and very large scale of data and high speed required. In those case we use our non-relational database. Example of social media like Instagram, like, comments, post, followers. For big data application, real-time analytics, we use NoSQL database. Another example you can take like a um, like like a YouTube you can take, right? So example of non-relational database like MongoDB, Cassandra, Redis, Firebase, and there are a lot of other database also available, but uh, popular popular tool for non-relational database is MongoDB. 1 minute. MongoDB, right? So this is the popular tool for the non-relational database.
सो जैसा कि आप लोग को समझ में आ गया कि नॉन रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, क्या चीज़ें होती हैं इनके अंदर। सो अगर हम एक बार कंपेयर करना चाहें तो रिलेशनल डेटाबेस और नॉन रिलेशनल डेटाबेस के बीच में, सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक यहाँ पे ऐड करता हूँ, एक स्लाइड इसके जस्ट नीचे ऐड करता हूँ और इसको मैं करता हूँ डिलीट, इस तरीके से डिलीट। ओके सो ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है, एक समझ लो ये रिलेशनल डेटाबेस हो गया, ये रिलेशनल डेटाबेस हो गया, आर डी बी एम एस, इन शॉर्ट फॉर्म वी कॉल इट आर डी बी एम एस, एंड नॉन रिलेशनल डी ई। सो यहाँ पे क्या होगा, डेटा एक्चुअली स्ट्रक्चर इन अ टेबल फॉर्मेट, इन अ टेबल, और यहाँ पे क्या होगा, फ्लेक्सिबल फॉर्मेट, फ्लेक्सिबल फॉर्मेट। एंड स्कीमा जो होगा, स्कीमा की अगर हम बात करें, स्कीमा यहाँ पे फिक्स्ड होगा और यहाँ पे इट्स अ फ्लेक्सिबल होगा, ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो रिलेशनशिप क्या होगा, यहाँ पे मैटर करता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। यहाँ पे वीक और नॉन होता है, कोई कोई मतलब नहीं है, हो ना हो। एंड लैंग्वेज जो हम यूज़ करते हैं इसके लिए, यहाँ पे हम एसक्यूएल यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम नो सिक्वल यूज़ करते हैं, नो सिक्वल, ओके। एंड बेस्ट फॉर स्ट्रक्चर डेटा, जब हमारा डेटा स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है, सो ये हम यूज़ करते हैं। और नॉन रिलेशनल डेटाबेस हम यूज़ करते हैं व्हेन डेटा इज़ लार्ज, व्हेन डेटा इज़ लार्ज, fast changing data. So in this case we use non-relational database. I think I am able to make you guys understand what are the cube comparison here. So we have seen like we have relational database, non-relational database. So relational database actually store data in a table, and non-relational database store data in a structure in like a flexible format, right? Schema की अगर हम बात करें, we talk about the schema of the relational database, so fixed होता है, and in a non-relational database schema is flexible, and relationship in a relational database is a strong and weak or none. For non-relational database we use SQL for the relational database, and we use NoSQL for the non-relational database, and best for the structured data is a relational database, and large and fast changing data we use actually non-relational database, right? Till here I think everyone is clear, everything clear to you guys, right? So for data job like data analyst, business analyst, data scientist, and relational database plus SQL are most important. So our main focus is SQL here, right? So actually which database type you think bank use? So anyone can answer in a chat. So which data type do you think bank use actually? Anyone have any idea which kind of the database bank used? Mm-hmm. Anyone? So bank used actually the relational database, and the my another question is which data type sorry, which database type might Instagram use? So if anyone with the non relational database, so it's going to correct, right? So for this purpose we use non relational database where our data is large enough, right? So डेटाबेस जो है जब हमारा बहुत बड़ा होता है उस केस में हम जो है नॉन रिलेशनल डेटाबेस यूज करते हैं, ठीक है। But for data related career, you should master in a relational database and SQL first. And in our course, we are going to use SQL Server as our database. Okay. So till here, I think I am able to clear to you guys what are the DBMS, what are RDDBMS, and all other things. So relation database is called like what is the relational database. Relational database is management system where data is stored in data in a table,
and table combined using some relationship, right? So this is the purpose we use SQL, and under the SQL we use DBMS. So database सिस्टम आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें, सो व्हाट आर द सिस्टम आर्किटेक्चर फॉर डेटाबेस. सो सपोज here have user in the top, and user use the database management system DBMS to perform some operations like a data definition, data manipulation, data security. They use the database, right? And the data, under the database, data is stored in a table, in a table format. Data is stored, right? And user access those data by using the SQL, right? So this is the structure you should have to follow. Okay. Okay, so why SQL is critical for the data rules? Because used by the data analyst, business analyst, and data scientist, and handles a millions of records, and it's a mandatory skills for data career, right? So this purpose SQL is going to critical for data job. So if we talk about the SQL architecture, so SQL architecture is going to like a client will be have like a SSMS and a database engine. You can call also the database brain, and database as a database engine as a brain, and the database files storage, and the query process and retrieve result, right? This is the process actually we use under the data SQL server database. सो एसक्यूएल सर्वर की अगर हम बात करें सेटअप की, तो यू शुड आई थिंक ऑलरेडी हैव इंस्टॉल एसक्यूएल सर्वर लाइक you can install like a developer edition, install SSMS separately, and connect using Windows authentication, and you can use like a local host or a server name as well also, right? So I have posted that video over the in the channel, so you guys can go and take that video as well. So आप लोग वहाँ से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है. सो अगर एस एस एम एस के इंटरफेस की अगर हम बात करें, तो जो है कुछ इस तरीके से होता है, जैसे कि अभी मैं यूज कर रहा हूँ एसक्यूएल सर्वर है. सो राइट, so this is the structure, you can say interface of SQL server. I am using in Mac, so it might be different in your system if you using like a window. So but everything is a process or going to same, so don't worry about that. So mm, yeah, so here you can see here we have like a database security panel under the server object. Here you can see have option called run, and the same way in your system also have, I think. So you should have to go through with that. And here you can see we have a database which is some system defined database, and we also created our database. So how we create our database, that is also matter here, right? So for that purpose, uh, so before we go ahead with the database, actually I would like to go with the type of, there are actually create database table, common data type. Let's jump on type of command. So there are mainly 4 type of command, but somewhere you will also find 5 type of the commands. And the first one is going to the DDL command, data definition language, which is structure to create, alter, or drop the data. And the DML for like insert, update the or delete the data. And the DQL for retrieve the data using the select command. And DCL premises for the grant and revoke the premises. And TCL for transaction control language, and which is like a commit and rollback. So for that purpose we use SQL command. So SQL command जो है हम डिटेल में देखेंगे जब हम आगे बात कर रहे होंगे, ठीक है. तो अगर हम बात करें कि हाउ टू क्रिएट आवर डेटाबेस, let's create our first database. So
I believe everyone are able to like open, everyone on the same page, and everyone open the SQL server. If yes, please type. So there are mainly two way to create our database. Uh, first one is just right click over here and the new database, and just create like this. And here you can give the name of that database like this, test1, and just hit the create, and go here and just refresh, and over here you are able to find out test1 over here. This is called our first database by using the interface. And second way is going to like a, just you need to like a use select, sorry, create command, like create, create database test2 like this, and run this code. Select all and run. Over here you are able to see command successfully completed. And when you go here and refresh, you are able to found those database over here. Under the database already we have like a tables, views, and many things like a probability, external resources, service broker, storage, security. So these are the things under a table. We store our table as well. So how to create our table, actually for that purpose we have also the two way, and there are many way, but we go with two way as of now. First one is just click over here and the new, and give the name and just hit the enter. And the second one is just type the query. But for today, in today's class, we are not going to cover this. So I think we are able to like create our first database here. If yes, please confirm. Okay, so everything is clear. I believe everyone is able to do the same, and we are able to understand what are the basic things required for our data and data analysis, like SQL Server. And we are able to understand what are the SQL Server, and kind of SQL, and um, what are the data, what are the database, kind of the database, why we use database. So these are the, I think clear to you guys until here. If everything is clear, please confirm. And I think we done with today's class here. And we are going to like in tomorrow class we are going to start with the absolutely from the practical way, so that everything is going to clear to you guys. I am going to paste all the data and all the documents over my GitHub repository, and from there you guys can retrieve the data and use. Also I am going to paste that data in a resource, paste the resource in a WhatsApp group. If you guys are not in the WhatsApp group, please join that group and stay updated. Let's meet at tomorrow at the same time. कल हम सेम टाइम 8 बजे मिलते हैं, और जो है आप लोगों को हम जो है सारा कुछ जो भी मटेरियल है हम जो है गिटअप पे भी डाल देंगे, वहाँ से लिंक आपको दे देंगे व्हाट्सअप ग्रुप में, और व्हाट्सअप ग्रुप में जो है हम ये मटेरियल डायरेक्ट वहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या होता है डेटाबेस और क्या होता है डेटा एंड SQL सर्वर हम क्यों यूज करते हैं। और कल से जो है हम बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में देखने वाले होंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ तक सबको अच्छे से समझ में आ रहा है, एक बार ओके लिखिए, और उसके बाद कल के लिए हम कल मिलते हैं, ठीक है। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, एंड सी यू टुमारो एट द लाइव, राइट। ओके, बाय बाय।